God decides to choose, He chooses for His love. Can you elaborate a little bit on our spiritual guides? You have spiritual guides that were with you in the jungle, and a lot of us here have spiritual guides that do teaching to us. What are the differences between them? Between the ones in the jungle and... Well, yeah, I mean, we believe in our spiritual guides as well as he believed in his. And I'd like to find out, you know, I don't know, just see what he comments on that. I'd probably make that very clear. The physical guides and the spiritual? Some you see in the dream state, or some you see physically, or you have? Well, all the different types of guidance. When we meditate, we sometimes, some of us, we call on our guides, our spirit guides, to come and to bring us messages. And we trust those because of the place that we're in, because of our own spirituality, and we feel that these are spiritual guides that are teaching us the way to go, or we wouldn't have gotten the Shahi. So पहला उनका सवाल ये था कि जो मुर्शिद होते हैं, रूहानी पेशवा होते हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है? कुछ लोगों को, जैसे आपने फरमाया था, जंगल में चले गए, फिर बड़े इमाम तशरीफ़ ले आए, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन आपको मिले, ये बता दें कि हम भी मजहबी माहौल में, लिहाजा वो सही गाइडेंस मिल रही है, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? रूहानी तालीमात दी जाती है या नूर की तरफ से? उसमें ये है, सही भी होता है, गलत भी होता है। जी सर, there's truthful guidance and the guidance may be false, especially in the latter case where you're sitting in a gathering and you receive some knowledge or some intuition. अब तुम जब जिक्र कर रही है, तो जिक्र में बैठी हुई है, ठीक है, वो शैतान तो नहीं आएगा, तेरे अंदर तो शैतान है ना। Shazam was saying that while sitting in a gathering of zikr, for example, it may be a holy gathering, but the original Satan may not affect you in that gathering. Not every person has a small Satan inside them. They may be affected by that. So how to tell whether this is guidance from a spiritual guide or it's from evil or an angel? ओरिजिनल शैतान उस वक्त नहीं आएगा ना जब यहाँ वली बैठा होगा, उसके साथ जिक्र करिए ना। अगर वली नहीं है ना तो फिर वो भी आ जाएगा। Shazam was saying that if in a spiritual gathering you have a friend of God, a saint, a perfect spiritual guide sitting next to you, then the original Satan won't come because that matter will be protected. But in the absence of a spiritual guide sitting next to you, Satan could come. तो शैतान अल्लाह से नहीं डरता, खुद अल्लाह करता है। Satan is not frightened of chanting God's name because he chants God's name himself. इस पर शनाख्त कैसे हो कि शैतानी है रहमानी है? ये शनाख्त ऐसी होगी ना जब इसके जिस्म में आँखों में नूर आएगा ना पूरा। When in your body and in your eyes comes the light of God. फिर जब तू नूरानी चीज को देखेगी ना तो वो और चमकेगी ना इसके ऊपर। And when you look at something which is purified and enlightened, it will shine even more. और जब शैतानी चीज को देखेगी ना तो फिर वो डिम हो जाएगी ना। When you look at something which is from evil, it will actually start getting dim. ये निशान है। So this is the way to test it. उस वक्त होगी जब इसकी आंखों में नूर आएगा। But that will only happen when the light comes into your eyes, meaning when you are enlightened. जिस तरह वो टार्च होती है ना तो उससे देखा जाता है। Just as you have a torch, you look in the darkness. उसमें काला सफेद आदमी नजर आ जाता है। You can see the dark and the white person. हाँ, अगर वो टार्च नहीं है तो पता नहीं चलता है काला है। Without a torch, the darkness, you can't tell which person is standing before you, whether they have white skin or dark skin. ये आंखों में टार्च आ जाएगा नूर। In a similar way, the torch will come into your eyes. That light will be able to tell. ये अल्लाह करती रहेगी तो एक दिन इसकी आंखों में नूर आ जाएगा। By doing continuously Allah Allah, after some period of time, this light will come into your eyes. उस अल्लाह को और मजीद तरक्की देने के लिए फिर और काम भी करते हैं ना। कोई ये सखावत करता है, कोई रियाजत करता है, कोई दरबारों में जाके बैठ जाता है, यानी उसको मजीद और तरक्की देने के लिए। To achieve the progress at a greater speed and to enhance that progress, to achieve that light quickly, there are many people that do additional things, like charity. They go to tombs and visit places.
what is it with visiting tombs? I mean, you talk about that often, and I don't quite understand by just visiting the tombs. असल में पूछ रही है कि अक्सर ये तज़किरा फरमाते हैं कि दरबारों पे जाना पड़ता है, उसकी क्या वजह, क्यों, वहाँ से क्या बनता है? ये जो अंदर होता है ना, उनको वहाँ से भी खुराक मिलता है। जिसका ये शाप है ना हमारे, नहीं समझे? Shasam is saying they're just like spiritual shops. And by going there you receive light and nourishment. हमारे अंदर की रूह है ना, वो उनकी शाप है ना। Those souls we have inside us, for them it's just like a grocery store. Oh boy, going shopping. Oh boy. लेकिन ये है कि You don't say anything. जिस तरह आदमी सोया हुआ है, उसको मार्केट में ले जाओ, उसके लिए बेकार है ना। Shasam saying just as the person is sleeping, and if you take him out of his bed and take him to say Walmart, a shopping center, it's useless for him. इसी तरह अगर ये तुम्हारे अंदर सोया हुआ है ना, तो उसको भी दरबार में ले जाओ, वो बेकार है। In a similar way, Shasam saying that if your inner self, your soul is asleep, and you take it to the tomb, meaning take it to this store, then it's useless because you won't receive anything. फिर जब ये जागता है ना, फिर शाम में जाता है ना, तो वहाँ से इसको हासिल होता है ना। When it's awakened, when the soul is awake, then I can spend a lot. Then it goes to the store or to the tomb, then it receives something. अगर ये सो रहा है, फिर तो काबे में भी चला जाए ना, फिर कुछ भी नहीं। I'm saying that if your inner self is asleep, your soul is not awakened, then even if you went to the Kaaba in Mecca, you still receive no benefits. Subhanallah. He knows I like to shop. ये इनकी शाप। सही है। You've been talking to him. No, I didn't say. He won't let me spend any money, so I need to spend my soul on something like that, right? Okay. तो दरबार में लोगों जाने का पता नहीं, जाके बैठ के आ जाते हैं वापस, जैसे गए वैसे वापस आ जाते हैं। उनको पता नहीं ना वहाँ किस वक्त वहाँ जाएंगे। इसके लिए नहीं जाते, इसको फिर मिलता कुछ नहीं। चलो तो दुनियावी काम कुछ हो जाता है उनका, कुछ दुआ हो जाती है उनकी। कोई टाइम भी होता जाने का या कभी भी जा सकते? नहीं, बहुत दरबार वाले तारफ्ती रहते हैं कि दूसरे से तो बहुत का टाइम होता है। सावन सी वाले उनका मगरब का टाइम उसमें, बास का सुबह का टाइम होता है। ये जो टाइम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखा होता है, ज़िंदगी के बाद भी उनका वही टाइम। अब तुमने असल से मगरब तक रखा होगा ना, ज़िंदगी के बाद से मगरब तक वो इस तरह। हाँ, जो जैसे रूहानी मरीजों का भी है, रूहानी का सावंशी वालों का जो मगरब तक मरीजों का ना, उनका मगरब से मरीजों का शुरू होता है, आधी रात के बाद जो है रूहानियत का शुरू होता है। वही मगरब में जाते हैं, दिमाग शुमार शुरू होती है, मरीज नाचते कूदते हैं। So just explaining about the rules allocated to tombs, and they're saying that the saints during their physical life, they, for example, allocated the times in the morning or the evening where they would see seekers of medicine or healers, people coming for healing and people who came for God. In a similar way, after their physical demise, spiritually, when people go to tombs, the saints have allocated times. You know, they're not there all the times.